kids, welcome to the first lesson of Spanish grammar basics. So come on, let's get going. ¿Qué vamos a hacer? So what all are we going to do today? क्या करेंगे हम? Presentarse. We will learn how to present ourselves in Spanish. Number 2, we will be looking at the conjugations of 3 very common verbs in Spanish: ser, tener, y llamarse. 3, we will understand how to ask each other los datos personales, some personal questions. And number 4, we'll be doing some exercises. कुछ exercises करोगे तभी तो पता चलेगा आया है या नहीं. So, let's begin with presentarse, which means to present yourself. Now, to present oneself in Spanish, हम 3 verbs use करते हैं. Ser, to be, tener, to have, and llamarse, to call oneself. अब पहला एग्जाम्पल देखिए, आई कॉल माई सेल्फ राधिका. अब इंग्लिश में हम यूजुअली क्या बोलते हैं? माई नेम इज राधिका. बट इन स्पेनिश अगर हम लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन उस पर देखें, इट इज आई कॉल माई सेल्फ राधिका. Me llamo Radhika. Pues, I have 26 years of age. So, I am 26 years old नहीं होता स्पेनिश में. स्पेनिश में लिटरली हम बोलते हैं I have 26 years of age. Tengo 26 años. Okay, I use the verb tener. Pues, I'm Indian. So, I'm an Indian. Soy India. अगर कोई boy है तो soy indio. Now I'm a girl, so soy India. I'm a teacher, soy profesora. Soy profesora. So आपने देखा, मैंने ser, tener, llamarse तीनों verbs use करके अपने आप का एक basic introduction आप लोगों को दे दी. So now let's look at the conjugations. So conjugation of the verb ser, which means to be, or as we translate it as, is amar written, right? So yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. तो ये चीज आपको स्पेनिश में पता है. अगर आप कोई भी सेंटेंसेस लिख रहे हो, आपके लिए सुखे तो लिखना जरूरी नहीं होता. सब्जेक्ट के बिना भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं इन स्पेनिश. ओके, इसी तरह tener की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं बच्चों. इट इज एन इरेगुलर कॉन्जुगेशन अगेन. yo tengo, tú tienes, you see, stem change. Él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. So, ये हमने कर ली tener verb की conjugation. आगे बढ़े. Let's see how we conjugate llamarse. अब ये थोड़ी सी अलग है verb, क्योंकि llamar is the regular AR verb and se is the reflexive pronoun. So हम already सीख चुके हैं reflexive verbs. Link नीचे डाल दूंगी टैब पे. Okay. Now, with you, the reflexive pronoun is me. With tú, te. Él, ella, usted, se. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas, ustedes, se again. And as you see, llamar को मैंने एक regular AR verb की तरह ही conjugate किया है. llamo, llamas, llama, llamamos, llamais, llaman. So जब मैं sentence बनाऊंगी, okay, I can ignore writing the sujetos, but I can never ignore writing the pronombres. I have to use them. So sentences: me llamo Radhika, te llamas Ayush, se llama Joy. So इस तरह we use llamarse to tell someone's name in Spanish. तो चलिए, 3 verbs, हम तीनों की conjugation करा दी है, तो time है एक practice exercise का. So you will practice filling in the following sentences with the correct conjugations of either tener, ser और llamarse. Sentence को समझो and लिखो. अब इसमें आप गलती क्या करोगे मैं बताती हूँ. Yo dash Anna, I dash Anna. आपके दिमाग में आएगा इंग्लिश. My name is Anna. इसके लिए वर्ब करोगे you ser और लिख दोगे yo soy. गलत नहीं, ठीक है, डोंट वरी. बट बेटर वे क्या है?
actual way. Yo me llamo Ana. Okay. Similarly, for the age, आप क्या करोगे? You are 14 years old के लिए आप तू eres लिख दोगे, ये गलत है भाई. क्योंकि एज के लिए particularly we use tener. So tú tienes 14 años. Okay. So इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आंसर्स लिखिएगा. Okay. चल, अब मैं बढ़ रही हूँ आगे with datos personales, which means the personal details, preguntas y respuestas. कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको हमें आंसर करना होता है टू टॉक अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो स्टार्ट करेंगे विद समवन्स नेम. किसी का नाम कैसे पूछना है स्पेनिश में? दो तीन ऑप्शन है. पहले, ¿cómo te llamas? सो व्हेन यू आर बीइंग कैजुअल किसी के साथ यू से ¿cómo te llamas? बट अगर थोड़ा फॉर्मल होना है तो यू यूज ¿cómo se llama? आपका नाम क्या? ओके. नेक्स्ट क्या है? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? और ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es tu apellido? और ¿cuál es su apellido? So ये हमारे ऑप्शंस हैं टू आस्क समवन्स नेम. डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो, किससे बात हो रही है, कैसी कॉन्वर्सेशन है, आप चूज कर सकते. सबसे कॉमन इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन. तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही तरह से होता है, me llamo, एंड देन यू टेल द नेम. ओके. अब किसी की एज पूछनी है तो ¿cuántos años tienes? अगर इनफॉर्मल है तो ¿cuántos años tiene? अगर फॉर्मल है. रिप्लाई tengo के साथ या tener वर्ब के साथ. ओके. अगर किसी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पूछनी है, लाइक आपका ईमेल क्या है, आपका फोन नंबर मिलेगा, तो कैसे पूछना है स्पेनिश में? ¿Tienes móvil? लाइक इंस्टेड ऑफ आस्किंग आपका फोन नंबर मिलेगा, आप सीधा पूछो डू यू हैव फोन? फोन है तो नंबर दो ना. So tienes móvil or tiene móvil, and the other person would reply by saying sí. SL, yes, it is. My mobile number is. Okay. ¿Tienes correo electrónico? So do you have an email? और tiene अगर आपको फॉर्मल होना है correo electrónico, and you reply by giving the email address sí, yes, and your email ID. Okay. इसके अलावा बच्चों, इफ यू वांट टू आस्क समवन्स ओरिजिन या नेशनैलिटी कि वो ओरिजिनली कहाँ के हैं या क्या उनकी नेशनैलिटी है, व्हाट डू यू आस्क? ¿De dónde eres? So what's your origin? From where are you? Or if you want to be formal, ¿de dónde es? Reply soy de, and you tell the name of the city or country you come from, or you directly tell the nationality. Soy alemán. So in this case, I am from Berlin. Berlin is the capital of Germany. So I am German. आप किसी भी तरह से आंसर कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन, आपको डाउट है, आप सीधा पूछना, eres francesa? So are you French? If someone is, so he or she will say sí, soy de Paris. So yes, I'm from Paris. Or no, soy italiana. So I'm Italian. Okay. So this is a way of asking someone's origin or nationality. Moving on to the last kind of question, to ask someone's profession, कि कोई क्या काम करता है. You ask, ¿en qué trabajas? So in which sector do you work, or ¿en qué trabaja? The other person can reply by saying, soy profesor. Simple. Or ¿a qué te dedicas? So what are you dedicated to? So what are you like dedicating most of your time to? So you say, trabajo en un banco. So I work in a bank. Or trabajo de camarero. So I work like a waiter. Okay. So these are some different ways of asking questions बच्चों and giving their reply. तो चलो, ये सब तो हो गया. बट प्रॉब्लम क्या आती है? आपके बेसिक्स. आप क्वेश्चंस याद कर लेते हो, उसको आंसर कैसे करना है ये याद कर लेते हो, बट बेसिक भूल जाते हो, तो वो भी रिवाइज करा देती हूँ ना. लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स. सो विल रिवाइज द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, क्योंकि मोबाइल नंबर बताना हो या एज, स्पेनिश काउंटिंग तो आनी चाहिए ना. सो वी स्टार्ट विद दिस. 0 to 16 याद करने ही पड़ेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So that is 10 plus
6. 17, 10 plus 7. 18, 10 plus 8. And then comes 20. Now, 20 की लाइन थोड़ी यूनिक है. They don't have a E in between. Y नहीं आता बीच में. 20 E उनु नहीं बोलते. Instead, we remove the last E, put an I instead and say 21, 22, 23. यहाँ spelling mistakes बहुत करते हो आप लोग, तो ध्यान रखो. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. इसके बाद तो लाइफ एकदम मस्त है. 30, y1, 30, y2, 30, y3, सेम चलेगा. 40, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, and CN. We end with the 100. A quick recall of all the numbers in Spanish. इसके बाद क्या याद दिलाना है? The gender. el género. मैं ऑलरेडी एक शॉट डाल चुकी हूँ इस पे डिटेल में टू आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, बट यहाँ पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी ऑफ नेशनैलिटीज एंड प्रोफेशंस. ओके, so first let's revise the rule of genders in case of nacionalidades. Nationalities. So any nationality that ends with a O is generally masculino. Any nationality that ends with a A is generally feminine. Any nationality that ends only with a consonant is generally masculine. Consonant plus A, feminine. But there are some nationalities that are same in both masculino and feminino. How do you know them? You learn. That's it. Okay. Similarly, let's revise the rule of gender en las profesiones. So here, it's very simple. Any profession ending with O or a consonante is masculino. Any profession ending with A or consonante plus A is feminino. All the nationalities ending with ista, they are gender neutral. इनके पीछे आप एक आर्टिकल लगाओगे जो हेल्प करेगा सामने वाले को समझने में whether you are referring to the male profession or female. Okay? Yeah. काफी कुछ रिवाइज करा दिया ना? So it's finally time for a practice exercise. So here I'm giving you 6 questions to answer. Actually 5. To answer and check आपको कितना समझ आया है to present yourself in Spanish. So इसी के साथ बच्चों, my first lesson ends here. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. I'm going to see you soon with your next revision topic of articles. Yes. Till then, adios.